नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 2 पा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2 यूनिट 2 जहाँकि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड इंपैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर इंपोर्टाट थीम्स क्वेश्चन आंसर आप शेयर करी और वीडियो आगे मुझे कहि आप पीडीएफ नोट्स टी किपर भाव डाउनलोड करेंगे। चलो तो स्टार्ट करवा। तो फास्ट टाइम देखा राइट अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस माने जो इंडिपेंडेंस समय रे फर्स्ट फेज कौन थिला हमरो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्षेत्र रे। तो द फर्स्ट दिस पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूड द पीरियड ऑफ 50 to 65 1950 रु 1965 पीरियड को आछे। एट दैट टाइम से समय रे द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इनॉर्मसली अंडर डेवलप्ड विथ वेरी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। से समय कौन आम जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था बहुत वीक इंफ्रास्ट्रक्चर था। द फर्स्ट 5 year प्लान प्रथम वर्ष योजना डिड नॉट विजुअलाइज एनी लार्ज स्केल प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये किसी कौन इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी विशेष प्रोग्राम ना। The second 5 year plan gave it a top priority by establishing of basic and capital goods industries on a large scale. Second year plan कौन ना को गुरुत्व देगला। The third year plan placed great emphasis on building of capital goods under the public sector. Next time देखा what is the period of declaration कौन द सेकेंड फेज 1965 to 1950 रु 1965 पुणी 1965 टू 1980 से पीरियड ऑफ डिसेलेरेशन ओके डिक्लेरेशन कंज्यूमर गुड्स सेक्टर वेयर गिवन इंपोर्टेंस कौन कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को इंपोर्टेंट दिगला। एंड द गवर्नमेंट adopted the ब्रह्मानंद strategy of the mechanizing agricultural sector and engineering gain revolution सबज विप्लव। The period between 1965 to 1975 was marked by some fall industry growth rate. It is said to be a period of structural retrogression where the growth of the rate of capital goods sector and basic industry also fell. Next time देखिबा what is economic sector। तो the Indian economy can be classified into various sector on basis of ownership, working condition and the nature of activities. Mainly it is classified to 3 sector, namely primary sector, secondary sector and tertiary sector। ओके जो इकोनॉमिक सेक्टर कौन 3टा देखले हम क्लासिफाई हैला जेपरि फर्स्ट आसला कौन हमरो मेनली 3 सेक्टर। फर्स्ट हला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ अंडरटेकन बाय द यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। प्राइमरी कौन ना नेचुरल जेपरि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट टू द एंड फाइनेंस आर इंक्लूड द टेरिटरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। The organized sector is also called the formal sector. In this sector, employment terms are fixed and regular, and the employees get assured work with the social security. Workers in the organized sector enjoy security of employment and work only fixed number of hours. The terms of employment are regular. It refers to licensed organization that is registered by the pay goods and service tax. Organized माने कौन जहाँकि ऑर्गेनाइज हो सरकार टू आम लीगल आकार कहीं टैक्स भरती। द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री जो आम देशर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउ जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इकोनॉमी में पढ़ा जो मैंने कि यह जानना चाहते इकोनॉमिक प्लेस आप चेक करके ये सब देखिपारे जीडीपी कौन जीएनपी कौन। ओके इट इज ऑल्सो टैक्सड एंड माइंड बाय द गवर्नमेंट। बर्तमान देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन ना ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो नोन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वन मास आसपे। दिस सेक्टर इज नेदर टैक्सड नॉर माइंडेड बाय द एनी फॉर्म गवर्नमेंट कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में आम टैक्स दूसरे किंतु एथिरे आम कौन टैक्स दिए। द एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी are not included in the gross national product and gross domestic product of the country. The contribution of informal sector is not estimated. There is no work security in the organized sector। तो organized sector ना किसी आमर जो वर्क को नहीं किसी सुरक्षा न थाए। What are the characteristics of unorganized workers? The characteristics of workers of unorganized sectors are no formal employer relationship, subject to exploitation, use of old technologies, less social authority measures। नेक्स्ट टाइम देखिए राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन कौन इंपोर्टेंट रही कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ
इट्स ए शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपोर्ट्स इटीसी तो आम कौन जीडीपी तार कंडीशन थाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए एक्सपोर्ट हुए इट रिटेन्स सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स ऑन द वन हैंड एंड फूड फॉर द वर्कफोर्स एंगेज इन इट्स द सेक्टर इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट द जीडीपी एंड एक्सपोर्ट्स फॉर द कंट्री आमर कंट्री जीडीपी बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनक्रीज होता है एवं ता सहित आमर जो एक्सपोर्ट थाए आम जो रप्तानी करता इनक्रीज होता है व्हाट इज नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट बा एनएटीपी कौन द एनएटीपी बा नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय द आईसीआर बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कोऑपरेशन बाय डीओसी द वर्ल्ड बैंक एश्योर्ड असिस्टेंस ऑफ 200 मिलियन फॉर इट वर्ल्ड बैंक 200 मिलियन देला Its main aim is technological generation and its transfer. It's three major components. आर मध्य तीनोटी मेजर कंपोनेंट रही है जपरिक एग्रो इकोसिस्टम रिसर्च इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट टाइम देखा व्हाट आर द क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर द स्मॉल फ्रैगमेंट एंड लैंड होल्डिंग लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज लैक ऑफ mechanisms, social irrigation, inadequate storage facilities, transport and agricultural marketing. Next time देखिए what is जमींदारी system. The जमींदारी system was introduced by Lord Cornwallis in 1793. 1793 जमींदारी system टी Lord Cornwallis को introduce करते through permanent settlement. Under the permanent settlement, जमींदाrs were found to be more interested in higher rent than agricultural improvements. During the early 19th century efforts were made to undo the adverse effect on permanent settlement and to provide for the temporary settlement of a metropolis. तो ये सब आम लंग क्वेश्चन सब आउ टिके ब्रीफ देखा आउ टिके एलोट कर देखा बर्तमान देखा रोहितरी सिस्टम बन रोहितरी सिस्टम वाज प्रेजेंट इन द प्रोविंस ऑफ माद्रास बॉम्बे होता ये जो रोहित वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज द प्रोप्राइटर विथ द राइट टू ट्रांसफर ऑफ मोर्टेज और subject his land. It started in Madras in science in 1772. 1772 Madras स्टार्ट होता was later extend to other state पर आस्ते आस्ते अन्य स्टेट को एक्सटेंड होता रोहितरी सिस्टम थी रोहित मैंने तार मुख्य थे अंडर दिस सिस्टम ये सिस्टम रे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट वाज द कल्टिवेटर्स हिमसेल्फ एंड देयर वाज नो इंटरमीडिएट बिटवीन हिम तो कौन ना जो मैंने कि लैंड होल्डर थे से सरकार को पे करे मझे कौन मध्यस्थ नथिले रोहितरी सिस्टम रे द रोहित हैड फुल राइट रिगार्डिंग सेल ट्रांसफर एंड लीजिंग ऑफ लैंड एंड could not evict from the land as long as he pays and land revenue. Next time देखिए what is Mahaulari system. तो द सिस्टम वाज इनेक्टेड बाय विलियम बेंटिंग इन आग्रा आग्रा औध एंड लेटर एक्सटेंड टू मध्य प्रदेश एंड पंजाब तो विलियम बेंटिंग द्वारा आग्रा औध पर यह मध्य प्रदेश और पंजाब को मध्य विस्तार है अंडर दिस सिस्टम यही सिस्टम द विलेज कम्युनिटीज हेल्ड द विलेज लैंड्स कॉमनली इट वाज जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटीज टू मेक पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू मैंने महल थे महल मैंने मुख्य थी से कलेक्ट करके पे कर सरकार को द लैंड ओनरशिप इज हेल्ड टू जॉइंट ओनरशिप द विलेज बॉडी नेक्स्ट टाइम व्हाट इज जागीदारी सिस्टम इट इज सिमिलर टू जमींदारी सिस्टम जागीदारी सिस्टम कौन जमींदारी सिस्टम सहित सामंजस्य समानता द जागीदारी सिस्टम इज पावर टू कंट्रोल द अंडर प्रोडक्टिव मेसेज ऑफ विलेज बाय एंगेजिंग देम इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो लैंड कंट्रोल बाय द स्टेट इन इंडिया एंड इट्स रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड लैंड टेन्योर वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट द नेशनल पॉलिसी रिकमेंडेशंस रिजल्टेड इन differing tenancy reform laws in the state. Next time write the name of land reform measures. So the major land reform measures in India are abolition of intermediaries, tenancy reform मैंने कौन मध्यस्थ को हटेगा tenancy reforms ता सहित selling on land holding, consolidation of land holding, ग्रामदान एंड भूदान. व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सबुज विप्लवर पॉजिटिव कौन इम्पैक्ट कौन थिला तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स रिड्यूशन इन द इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स कैपिटलिस्ट फार्मिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिमांड फॉर लेबर तो यह सब जपरिक आम एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ला पर फार्मर मान प्रॉस्पेरिटी वृद्धि है ओके. व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट तो आगुरी आम कही जदि किसी भल हो खराब तो रीजनल डिसएबिलिटीज मेजर कमर्शियल ग्रुप crops untouched by the green revolution, increase in interpersonal qualities, health and environmental problem. It creates unemployment and did not benefit small and marginal farmers.
तो ये किसी नोट्स टी जो मैंने कि नोट्स को डाउनलोड कर चाहते टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में आपने कि जॉइन होगी नोट्स डाउनलोड करेंगे। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आम यूनिट 3 जहाँकि सोशल मुवमेंट्स जो आम सोशल मुवमेंट कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स समस्त इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डिस्कसन करवा।